सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे, और हाँ, देखते रहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हमेशा नई नई स्टोरीज़, नई नई कहानियाँ लेकर आता है आपके लिए, और दूर दराज के लोगों से मुलाकातें भी कराता है। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी तकरीब हो रही हो, आप चाहते हो कि सफ़ीर पाकिस्तान की ज़ीनत बनाएं, प्लीज़ हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आज भी एक मुलाकात है, और ये बहुत ही अहम तरीन मुलाकात है मेरे लिए। और जैसे आप जानते हैं कि शिकागो जो है बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट है, और वहाँ पे पाकिस्तानियों का अमलदारी बहुत मजबूत है। वहाँ पे वो कंट्रोल भी रह चुके हैं, CEO भी रह चुके हैं गवर्नमेंट के अंदर, और वहाँ के सेनेटर, कांग्रेसमैन, गवर्नर पाकिस्तानियों से बहुत करीब तर हैं और उनकी बात सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि शिकागो जो है एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, और वहाँ पे पाकिस्तानियों की अहमियत बहुत है, क्योंकि देखें हर जगह पाकिस्तानी आबाद हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, सियाटल, वाशिंगटन DC, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तानियों का बहुत ही किरदार है और रोल है और अमलदारी है। और आज जिस शख्स को मैं मुतारिफ़ करा रहा हूँ, उनका नाम है अख्तर अली। अख्तर अली साहब बाय प्रोफेशन, बाय फैमिली बिजनेसमैन हैं। ये चौधरी यासीन परवेज़ साहब के साहबजादे हैं, और इनका ताल्लुक़ है सादिकाबाद से। और ये मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि सादिकाबाद इज़ ए रिचेस्ट एरिया, और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। फौजी फाउंडेशन है, वहाँ पे आपके खाद की फैक्ट्री है, और डेफिनेटली अख्तर अली साहब की कॉटन जिनिंग फैक्ट्री भी वहाँ थी, और इनके वालिद साहब भी बड़ा बिज़नेस था। लेकिन हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में इंसान रहता है, और इनका फिर अमेरिका आना हुआ। और डेफिनेटली अमेरिका आने के लिए कुछ वजूहत होती हैं, कुछ ज़रिया होता है। अमेरिका आए तो उन्होंने दोबारा अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया, और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली, केमिस्ट्रीज़ के कुछ प्रोग्राम किए, और एक जॉब का आगाज़ किया एज ए केमिस्ट किसी कॉस्मेटिक कंपनी के अंदर। और वहाँ से इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट की डिमांड है। तो फिर उन्होंने माशाल्लाह अपनी तिजारत को फ़रोग़ दिया, फैक्ट्री हासिल की, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और आज जो इनके पास फैक्ट्री है वो 250,000 स्क्वायर फीट पे है, और तकरीबन 15 एकड़ के इलाके पे वो फैली हुई है। इनकी प्रोडक्ट जो है वो हेयर कलर प्रोडक्ट है और स्किन प्रोडक्ट है, जो मोस्टली एशियन अफ्रीकन अमेरिकन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। बालों को सीधा करना हो, घुंघराले बनाना हो, उनको शाइन करना हो, और ये प्रोडक्ट इनकी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। अगर आप इनकी फैक्ट्री में दौरा करें तो आपको पूरा एक दिन चाहिए पूरी फैक्ट्री देखने के लिए। 15 एकड़ पे फैली हुई फैक्ट्री एक मिसाल है और एक मॉडल है तमाम पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए, कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो इतने बड़े बड़े बिज़नेस को संभाल रहे हैं और अपना नाम पैदा कर रहे हैं। माशाल्लाह इनका बिज़नेस ओवर $100 मिलियन से तजावुज़ कर चुका है। इसके अलावा अख्तर अली साहब में और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। खूबियाँ ये हैं कि वो बहुत ही जेनरस हैं, काफ़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी से बहुत प्यार करते हैं और उनसे क्लोज़ रहते हैं। और आप कभी उनसे ये महसूस नहीं करेंगे कि वो इतने बड़े आदमी हैं और मगरूर हैं, या उनमें प्राउड है। उनकी फैमिली, उनकी बच्चे सब माशाल्लाह बड़े डाउन टू अर्थ हैं। नाज़रीन, तो आइए मुलाकात कराता हूँ आपकी उस शख्स से जिसका वाकई आपको इंतज़ार होगा कि आप उनकी बातें सुनें। आइए मिलते हैं जनाब अख्तर अली साहब से। मेज़बान बिरयानी सेंटर, जायकेदार, मज़ेदार, खुशबूदार, 100% ज़बी हलाल मुगलाई खाने, हैदराबादी और पाकिस्तानी खानों का वाहिद मरकज़। पार्टी और कैटरिंग के माहिर, साल साल का तजुर्बा और आला खिदमत के साथ बेमिसाल मेज़बान। Come to मेज़बान and eat halal food.
नाज़रीन, आज मैं अपने शहर से बहुत दूर लॉस एंजलिस से यहाँ शिकागो में मौजूद हूँ. शिकागो इज़ ए वेरी पॉपुलर सिटी एंड वेरी पॉपुलर स्टेट एंड और मेरी भी पसंदीदा है. स्पेशली आई ऑलवेज लाइक समर हियर, बट डेफिनेटली सम टाइम आई लाइक द कोल्ड वेदर एज वेल because I'm from Los Angeles and Los Angeles always summer and hot and little bit cool there, but today opportunity here I'm visiting Chicago. तो मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई माशाल्लाह यहाँ पे, और काफ़ी मेरे दिलीना फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं, तो मेरा काफ़ी दिल लगता है और मैं चाहता हूँ कि शिकागो से जियो के राब्ते बढ़ जाएं और शिकागो शुड बी नोन ग्लोबली कि यहाँ पे कौन से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बहुत ही बड़े काम कर रहे हैं माशाल्लाह, जो पाकिस्तान के छोटे छोटे देहातों से गाँव से पढ़कर आए, चक से आए और यहाँ पे उन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाया, बड़ा ताबना मुस्तकबिल बनाया. तो आज यहाँ पे मेरी एक मुलाकात है जो बहुत ही माशाल्लाह रिनाउंड एंड बिजनेसमैन है. बाय प्रोफेशन ही इज़ ए बायोकेमिस्ट, बट माशाल्लाह उन्होंने माशियात में भी डिग्री ली है. तो इसे डबल सोर्ड यानी कि बायोकेमिस्ट, टॉप ऑफ दैट इकनॉमिक्स की डिग्री रखते हुए तो उन्होंने अपने बिज़नेस को माशाल्लाह कई फोल्ड बढ़ाया है. और ये इतने पुराने नहीं हैं अमेरिका में, जितने लोग यहाँ पे रहते हैं सदियों से रह रहे हैं, 40 साल से 30 साल से. ये 1994 में यहाँ पर आए और इन्होंने फिर डेफिनेटली जॉब्स की और मुख्तलिफ काम किए और फिर अपना बिज़नेस का आगाज़ किया. और आज माशाल्लाह इनकी अदारा जो है एक रिनाउंड एंड वेल नोन अदारा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, और इनका नाम है अख्तर अली. बहुत ही अच्छे मिजाज की शख्सियत हैं माशाल्लाह, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं और कम्युनिटी से दूर नहीं रहते, हालांकि काफ़ी मसरूफ़ हैं, काफ़ी ट्रैवल करते हैं, लेकिन फिर भी अपना वक्त निकालते हैं. आइए बातचीत करते हैं जनाब अख्तर अली साहब से. अख्तर अली साहब, कैसे मिजाज है आपके? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं. ठीक है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक फर्स्ट ठाक? क्लास. मैं एक छोटी तहसील है पाकिस्तान की, सादकाबाद. I born in Sadkabad. I'm very proud to be born there. It's a very industrial area आप कॉल कर सकते हैं पाकिस्तान में. Small तहसील but richest तहसील in Pakistan. It's more into like all the major cotton growers are there, wheat growers are there, sugarcane growers are there, and also have Asia's two biggest fertilizers are there. Well, Asia's biggest fertilizer there. Two biggest fertilizer there, which is FFC, Fauji fertilizer, and Fatma fertilizer. They are next to each other. And I have a business there actually. One of my ginning factory is right in middle. Achha, right And both, yes. So it's a good area. I thanks God I born in that place in Sadkabad. Then I studied in Sadkabad. Then there's a Wabda College very close to Sadkabad. I did my bachelor there. I did my master, Islamia College, Sakkar. सक्कर से? Sakkar, yes. लबे मैदान बड़ी मशहूर. I did my master economics in Sakkar, and then in 1989 I did some farming for probably a couple of years after I finished my education. And then 1989, I moved to U.S. My sister used to live there. She filed my father actually. Okay. She filed for the father. My father was here for a year. Then he moved back, and then we came, me and my whole family. My brother, all my siblings are here in Chicago. Chicago. Yeah. So from there, where I started U.S. life. US life. Right. And ज़िंदगी का आगाज़ हुआ. आगाज़ हुआ, exactly. Then from there, I went to a college, not extensively, but to cover up some of my courses. So I took some almost 1 year chemistry courses here to refresh my memories. And then fortunately, I find a job with the cosmetic industry. Okay. So from there, I start my career, and I worked probably 3 years probably for other people. Then I decided to get in my own business. From 1989 and 94, I was in my own business, cosmetic. So exactly when did you start the business? I opened up my small lab
in Chicago Heights, Illinois, yes. I was there for 6 months. Then I moved into a bigger factory. I rent another bigger factory in Harvey, Illinois. Harvey, Illinois. I was there for almost another year. Then I moved to Chicago. ایکسیلنٹ یہ ماشاءاللہ. دیکھیں مجھے یاد ہے اکثر میں جنگ میں پڑھا کرتا تھا صادق آباد کی خبریں. اوکے. اس کا ایک الگ کالم آتا تھا, اس میں صادق آباد کی خبریں ہوتی تھیں. دیکھیے جی, وہاں پر صادق آباد میں سب سے اچھی چیز جو ہے, ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی ماسک بھی وہاں پر ہی ہے. اس کا مسجد بھونگ. اچھا, مسجد بھونگ. بھونگ اٹس اے ہیوج, اینڈ دا گڈ تھنگ از آلویز اس میں کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے. نیور اسٹاپس فار لاسٹ 30 ایئرس. کیا نوابوں کا علاقہ ہے یا کیا؟ نہیں, وہ ریس نواب بھی سمجھ لیں. ریس وزیر ہے جس نے بنوایا, نہیں شروع کی تھی. ابھی کنٹینیو فرام ہز جنریشن ٹو از کنٹینیو اسٹل بلڈنگ. It's part of the Punjab. It's part of the Punjab. Sadka is the last city of Punjab actually. It's The last city is the or boundary of that mosque is on the border of Punjab and Sindh. اچھا, پنجاب اینڈ سندھ. تو آپ کا یہ کیسے خیال آیا؟ ویسے پہلے بتائیں کہ آپ کو پاکستان میں یور بیک گراؤنڈ فارمنگ اور انڈسٹری اور فارمنگ اینڈ انڈسٹری. تو آپ کے جو والد صاحب تھے, والد صاحب جی, تو وہ فارمنگ کرتے تھے. فارمنگ کرتے تھے. اس کے بعد آپ انڈسٹری میں آئے. انڈسٹری میں. تو آپ نے امریکہ کا رخ کیوں کیا؟ Well, as usual, everybody looking for a better opportunity. اچھا. تو پاکستان میں تھوڑا جو ہے اس وقت جو ہے فادر چاہتے تھے کہ ہم باہر جائیں اور جسٹ ٹو ایکسپلور مور, تعلیم حاصل کریں اور بیٹر تعلیم کے لیے. تعلیم تو خیر کمپلیٹ ہو چکی تھی کہ فار اے بیٹر لیونگ, بیٹر فیوچر, کیونکہ اپرچونٹی پاکستان میں اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے. جی دیکھیں جی, ماشاء اللہ چھوٹے سے ایک صادق آباد میری نظر میں ڈیفینیٹلی اتنا بڑا اسٹیٹ نہیں ہوگا, چھوٹا اسٹیٹ ہے, لیکن بڑی بڑی چیزیں ہیں. چھوٹے سے علاقے میں بڑی بڑی چیزیں ہیں. نو اٹس اے ہیوج. آئی مین پاکستان کی میرا خیال ہے کہ اگر سمجھ لیں کہ انڈسٹری کے حساب سے وہاں پر ود ان دیٹ ڈسٹرکٹ اراؤنڈ 137 کاٹن اینڈ آئل فیکٹریز ہیں. آل فیکٹری ہیں. like around 100 something. تو وہاں پہ مین چیز ہے کراپ کاٹن ہے. اور 3 شوگر ملز ہیں وہاں پر. 3 شوگر مل بھی ہیں. اور ورلڈ بگیسٹ فرٹیلائزرز وہاں پر ہے, بگیسٹ اینڈ سیکنڈ بگیسٹ آف ایشیا. Of Asia. Asia probably on the worldwide now. Yeah, that's very good. Fatma Fertilizer and FFC, which is 4G fertilizer. 4G fertilizers. Yeah. Excellent. So, mashallah, آپ نے امریکہ موو ہو گئے, اور آپ کا ایک کبھی خواب تھا, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ ہوں گے؟ میں جب آیا تھا تو میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ we am not gonna work for anybody else. میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ I have to do it, I have to do the business. ہوتا نا کہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ we belong to a industry area. جی. Or you've seen how other organizations and other industries do. So looking at keeping that in mind میں تھا کہ I'm gonna do my own industry, I'm gonna do my own manufacturing and all that mindset. Why in the cosmetic industry? When I came, my brother-in-law, he's in the same business. Same business. So I probably joined him in the beginning, probably 6 months, 8 months probably. And then from there, I move on to the different other jobs. Achha. So then I started working for Cali Chemicals, then for a little time for Dina Cosmetic. Then I do some consulting and research work. Then I started my own. I see. ماشاء اللہ, اس کے بعد جو آپ نے فیکٹری بنائی, اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ where did you stand as cosmetic manufacturers in America among others? Well, ہماری اسپیشلٹی آئٹم ہے. We in our جو انڈسٹری ہے, if I look at it, I'm probably even if you look at probably in US level or international level, in our niche market, I'm probably
be number 4 and number 5th in the industry in the world. In the world? Yes, probably. Number 4 and 5th in the world. Well, the secret, I think, is you have to be very dedicated and innovative, and then you got to have a feeling, and you have to be very ambitious, actually, what you want to do, what you want to achieve. It's not a one day or overnight, no. I have spent some good time, my lifetime into this, to developing this enterprise. And I'm looking forward to grow more. My son is 17. I'm preparing him to take over, and when he finishes college, inshallah, one day he will be. I told him we got to take this enterprise into $1 billion. This is my vision, to take this into a different level worldwide. Worldwide. So you don't want to be a public company? I haven't think about it. You never give I haven't think about it. Maybe, maybe not. It depends. It depends. Yes, Okay. it depends on the opportunity. Opportunity. And I believe on the mergers and acquisitions. I have bought probably 6 of my competitors in the industry in last. Bought them all. I bought them all. I have another factory in Mississippi, which is another acquisition I had, and we are doing very well there. We have marketing and warehouse in Nigeria. We have in Ghana. We have office in London and Dubai and South Africa as well. And we are opening up in Kenya now. How much you travel? I do travel a lot. I visit every office once a year. So that's 6-7 trips. And I'm building up a factory in Pakistan also as well, for cosmetic factory. कितनी खूबसूरत बात है, बावजूद तमाम इन धमाकों के, इस बेचैनी के, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में अमन नहीं है, बम धमाके हो रहे हैं. मैंने उनको एक बात कही, what I have seen in Pakistan, whenever I go, I see the high-rise building coming up, road are busy, more car than Patpatiya, जो बोलती थी bike. I've seen more cars, more fashions, and more modernization in Pakistan. Beside all these issues. पाकिस्तानियों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा. I want to make this message very clear. When you go to Pakistan and start a business, you need to follow Pakistani system. Don't try to try to deal that business with American system, no. Or any foreigner, no. You have to deal with Pakistani system, you have to follow that system. And that's very easy. Very easy. You need to hire good employees there, honest people that you should be able to observe. Once you have those, then I think the conducting a business is not that bad. Ali साहब का ये फार्मूला आप अपने बांध लें गिरा में कि follow the local system. Work with them, adjust with them, cooperate with them, and you will be succeed. The environment over there, there's so much potential. The reason I say so much potential, especially in these days, it's a very strategic location Pakistan have. You have a deepest port, which is Gwadar. You can make ton of money, country can make ton of money from that port. Another, look at how the Russian states got independent. That's another thing I like to mention to all the Pakistanis. There's one market called Shalmi. I don't know that. Shalmi market. It's Asia's biggest market right now because all. Where is it located? It's in Lahore, right in the middle of Lahore. Shalmi market. Shalmi market, and it's millions of dollar business being done in a day over there. In a day. It's a huge market. I was so surprised when I went around and see what they do. Unbelievable. Ali sahab, आपकी जो product है, I'm coming to the product. Okay. That I'm here to learn. Your product is direct to the American most. African Americans, yes. African American. My actually company name is AFM. AF stand for African. AM stand for America. AFM is the African American Concept Inc. Yeah, that's why I'm looking at the name. Abbreviation किस चीज़ का है? Yes. I'm going to ask you about that. African American Concept Inc. Yes. Concept. Okay. So, how big this market? Our market is quite big,
Probably ethnic market, I can say around $1 billion. Just ethnic markets, Ethnic. around $1 billion. Okay. Yes. So, what is the beauty and what is the quality and the depth of your product? Well, we stand for quality for sure, and we are very. We have few slogans on our brands. Our relaxer system, where our relaxer is the one you straighten your hair. We make people's hair curly and make it straight. So one of our niche, I can say, market is the relaxer business. So it's one of the number one relaxer in the industry at this moment. Your product. My relaxer, yes. Okay. Yeah, yeah. Okay. Do you have any further plan to expand this industry? Well, right now I'm growing. I'm opening up a lot of countries, and I got a expansion. Is you don't want to have a growing pain, but we are growing rapidly, and I'm expanding into different countries. How you're getting help through the technology? Like this is an advanced technology world, digital, wireless, automation. The way I look at it, I think every quarterly basis we look at what we need to upgrade, what we need to develop. That's why you see we have 600 items, because we discontinue many SKUs and we bring new items. New items. So the rotation, we are always in a development mode. And our R&D department is very strong. We have good chemists on board, and good production, good manufacturing system on both facilities. Yeah. अरे साहब आप इतना टाइम कैसे निकालते हैं? My wife is always upset. I don't give much time to the family, but I try to be. Sunday is my family day. I don't go nowhere. Saturday, Sunday is my family day. I don't party, nothing party. Unless I go with the family. Yes. Then it's justify. I can justify. Otherwise, how do you see the role of the overseas Pakistani in Pakistan? Over 13 to 14 billion dollar they send in the remittance to Pakistan every year, and they do have a surplus about 20 to 30 billion dollar in their pocket, in their resources. So that could be also be pipeline, but definitely these overseas Pakistanis see the government and the future. I think you're right, 100%. I endorse your statement. To me, that's your driving force for the country. Once you go to the Pakistan, there's a lot of business, but there's no development, or there's nothing being produced in Pakistan because of the energy crisis. Everything you use is being imported. Hardly I see dairy field is doing good. There's a bigger companies are there, Nestle and some others. But beside that, the local farming is there. Whatever is related to the farming is doing good. But beside producing any raw material for any other countries, or that's the biggest point, raw material. Raw material, right. But the farming side, yes. But beside that, textile industry used to be so good, but because of the government poor policies, it's not doing good. Definitely, हर शख्स की कुछ न कुछ आदतें होती हैं, जी. हॉबीज होती हैं. तो आपकी क्या हॉबीज हैं? I was playing cricket in Pakistan, as usual, all the Pakistanis do. Really? It was kind of, when I got here, I watched basketball. Bulls is my favorite team. Okay. And I still watch cricket, whenever there's a match going on, or any champion trophy, or any kind of matches goes on. I have interest in the cricket, and I watch Bulls whenever they play. You do any recreation when you got a time, golf or tennis or?
I do tennis, you know, I play tennis. So that's my time. I hardly get time, only once in a while on Saturday. I go for a tennis to play with my friends. Okay. And in the end, the secret of good health and success? It's my family. My wife have supported me a lot in my business, in my personal life. I think I have an excellent life partner. She's always there for me. My kids are always there for me. Even I'm traveling, they still kind of feel, you know, I shouldn't, but they say, okay, Dad, you got to do whatever you got to do. And my wife too. And I have a lot of relations, a lot of politicians come see me. Okay. Every week we have something going on in the house. And she compromise and help. And entertain all the guests. All the guests, yes. Yeah, that's a big contribution from the family. From the family, yes. अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें मौका दिया सफीर पाकिस्तान देखते हैं आप. Yep. And yes, I do. But another thing I like to mention, my father, when I started the business, he helped me a lot. Your father? My father. My father helped me from A to Z. And I always appreciate what he done for me. What is his name? His name is Chaudhary Muhammad Yasin Pervez. How big square foot is this? This is around 250,000 square feet, and it sit on almost 15-acre land. 15-acre land. 15-acre land, yes. Acre land. You own that? Yes, I do. माशाल्लाह तो मुबारक हो आपको. Thank you, no problem. तरक्की दे और मैं सलाम करता हूँ अपने वतन पाकिस्तान को और वहाँ के लोगों को. जैसा भी मुल्क है जैसा भी है लेकिन उसने एक हमें एक छत दी है उसने एक रहने की जगह दी है हमें और हमारा मुल्क है और वो हमारी डेस्टिनेशन है. और आफ्टर ऑल वी नो आवर डेस्टिनेशन वी हैव आवर वन कंट्री वी कैन गो बैक एंड लिव देयर in hot and cold, whatever the weather is, whatever the situation is. Well, that's what your motherland is. Motherland is all about. And it's full of resources. And full of all the resources. You have all the weathers there, all the fruits there, and all the time. God have blessed Pakistan so much, but the people not making sense. The government is not making sense. Yeah. They are not taking that opportunity and exploring what Pakistan have and put the country in the right direction. That's what we need to. That's a very good, माशाल्लाह आपने इस इदारे को इतना आगे बढ़ाया और definitely मैं बड़ा मुतासिर हुआ आपकी शख्सियत से, पर्सनालिटी से. How much you say thank you for your country, for your people who really contributing big time in America? Well, first of all, I want to thank Allah, Almighty God, who have blessed me for last many years since I born. Then I want to thank my parents who have grew me and give me good education and always pray for me to be successful. Then I want to thank my wife and my kids. Excellent. Thank you very much. You're welcome. Nice thank you. You. Thank you for coming over and I appreciate this. Thank you. Okay. नाज़रीन तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल. पानिया बुलेवार्ड में आरटीवीआई के बीचों बीच लिटिल विलेज इंडिया में शान महल के शानदार खाने के मुंह में पानी आए. मुगलई खानों की जन्नत शान महल, मायर शेफ के हाथों बने खाने दावतों की शान बढ़ाए. हसीन और जमील बैंक्वेट हॉल हर किस्म की पार्टी के लिए निहायत मौजूद, केटरिंग की आला इंतजामात. शान महल लाजवाब खाने बाकमाल सर्विस. शिकागो में यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीब ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के वसी ऑडिटोरियम में ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान कॉन्सुलेट ऑफिस शिकागो मुनक़्क़िद हुई.
तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम पाकिस्तान की तकरीब में इंडिया के कौंसल जनरल जनाब औसाफ सईद समेत 34 कौंसलर शरीक हुए। मशहूर पाकिस्तानी अटारनी नबीना ने MC के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ डॉक्टर इनामुल हक की तलावत कलाम पाक से हुआ। जेनी अवीटा और सादिया उकेली ने पाकिस्तानी और अमरीकन तराना सुनाया। पूरे पंडाल ने एहतरामन खड़े होकर कौमी तराना सुना। लेथी लास्को ने ऑफिस ऑफ द अटारनी जनरल लीसा मेडिगन, यूनिस सलमान ने कांग्रेसमैन बॉबी रश, सीजनल ब्रॉड ने मेयर शिकागो रामन मैनुअल का पैगाम पढ़कर सुनाया। यौम पाकिस्तान के लिए गवर्नर एलोनाइस पैट क्वीन का खुसूसी पैगाम रबीगा सांचेस ने सुनाया। फैसल तिरमिज़ी और हानिया तिरमिज़ी का तैयार करदा पाकिस्तानी कल्चर से मुतालिक खुसूसी स्लाइड शो दिखाया गया। यौम पाकिस्तान की तकरीब में एक तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी मुसव्विरों सादिया उकेली, फैसल मोयुद्दीन, समीना मलिक, ज़फ़र मलिक, तैमूर अहमद और उज़मा परवेज़ के फ़नपारे नुमाइश के लिए रखे गए थे। कौंसलर जनरल शिकागो फैसल नियाज तिरमिज़ी और ट्रेड कौंसलर ज़ाहिर अख्तर ज़मान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खुसूसन ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर नाउमर पाकिस्तानी डॉक्टर वसीउल्लाह खान का भी शुक्रिया अदा किया गया। यौम पाकिस्तान की तकरीब में अदील और दीगर फनकारों ने मिली नगमे पेश किए। तकरीब की ख़ास बात यह थी कि पाकिस्तानी कौंसलर ऑफिस की तरफ से पहली दफ़ा दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी और अमेरिकन को भी कसीर तादाद में मदऊ किया गया था। अंसार रिजवी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान, शिकागो। Because on this day, 74 years ago, in the historic city of Lahore, that the people of South Asia decided that they want an independent homeland, which they achieved within a span of 7 years. And before starting, of course, I have to acknowledge so many people, but my special thanks goes out to Mayor Roger Clare, who has been a strong and consistent friend of Pakistan for 27 years. Mayor Clare has the distinction of hosting the Independence Day of Pakistan for the last 23 years, and last year 13,000 people turned up. Thank you so much once again. Because Pakistan has a rich and historical culture, both in terms of civilization, our diversity, everything is our real strength. And today you would be able to see, because now Pakistani artists have started to make their mark in the global scene, that Pakistan, with a nation of 180 million people, and most of them are predominantly young, has started to express themselves in art, in film, in books. Pakistanis are making their mark in the international scene and here. Assalamu alaikum. Today we're celebrating here in Chicago Pakistan's birthday. Pakistan's and the Pakistani community, the who's who of the Pakistani community, is out here today, this evening, at the invitation of Faisal Tirmizi, the Honorable Consul General of Pakistan here in Chicago. And as you can see, we have had a wonderful evening of art and music and culture. And at this point, we would all like to wish you a very, very happy National Pakistan Day. Happy Pakistan Day. We're in Chicago and celebrating Pakistan. I am married to a wonderful Pakistani man, and I thank you, Pakistan, for all the wonderful friends and family that you have brought over here. आज सारी कौम ने यौम पाकिस्तान मनाया। इसी सिलसिले में शिकागो में आज तकरीब थी ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे तकरीबन 250-300 पाकिस्तानी पूरे मिड वेस्ट से, शिकागो से, डिट्रॉयट से, कैंस विचिटा से, सेंट लुइस से आए और उन्होंने हमारा कौमी त्यौहार मनाया। इस सिलसिले में गवर्नर पैट क्विन, मेयर राम मैनुअल, कांग्रेसमैन बॉबी रश और अटॉर्नी जनरल लीसा मेडिगन के खुसूसी पैगामात पढ़ के सुनाए गए। मैं सादिया उकेली हूँ, आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे शिकागो इलिनॉय में प्रोग्राम चलाती हूँ 4 हस्पतालों में आर्ट्स एजुकेशन का।
बच्चों के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, और फिर मैं क्यूरेटर हूँ और यहाँ पे लाहौर कमेटी शिकागो सिस्टर सिटीज़ इंटरनेशनल की आर्ट एंड कल्चर सब कमेटी पे काम करती हूँ, सर्व करती हूँ। आज 23 मार्च के दिन हमने कौंसलेट की जानब से एक बहुत बड़ा फंक्शन किया है। इसमें मेजर मेंबर ऑफ कम्युनिटी भी आए और उसके साथ हमने मेजर बिजनेसमैन कम्युनिटी को भी यहाँ पे इनवाइट किया है। तो ये इट वाज ए वंडरफुल फंक्शन और इसमें तमाम लोगों ने भरपूर पार्टिसिपेट किया। और सबसे खूबसूरत बात इस फंक्शन की ये थी कि हमने पाकिस्तान के कल्चर को इन लोगों के साथ शेयर किया। इसके अंदर हमारा म्यूज़िक था, इसके अंदर हमारे आर्ट्स थी, कलेक्शन थी जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने बनाई हुई थी। तो ऑन द होल इट वाज ए वंडरफुल ओकेजन। जी शुक्रिया इंसार साहब। मैं सबसे पहले अपनी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को पाकिस्तान का यौम आज़ादी पे भरपूर मुबारकबाद देता हूँ और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफिस को पाकिस्तान डे पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने ओपन किया है और तमाम कम्युनिटी को मदऊ किया है जिसमें हम सब लोग इसमें शरीक हुए, हम उसकी पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफिस भरपूर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आनर है कि ये इवेंट पाकिस्तान डे इवेंट पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफिस ने ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी में मुनाकिद किया। ये मैं यूनिवर्सिटी में यहाँ डीन हूँ डेवलपमेंट का और पब्लिक रिलेशंस का, और ये पहला बड़ा इवेंट है जो हमने नई अपनी बिल्डिंग में, ये जो 17 मंजिला बिल्डिंग बनी है अभी पिछले महीने ही इनफैक्ट वो तैयार हुई है। तो हमें बहुत ऑनर हुआ कि पाकिस्तान काउंसलेट ने सेलेक्ट किया यहाँ पे अपना प्रोग्राम करना। अक़वाम मुत्तहिदा के नाते से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और कई अंडर सेक्रेटरीज जनरल यहाँ आए थे और कलीदी ममालिक के सफ़रा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उन सब लोगों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क के तौर पर उभरे। उनकी पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ास तौर से पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और अमन व सलामती, माशी तरक्की, हुकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने भी इक़दाम किए जाते हैं या जितने भी फ़ैसले किए जाते हैं, पाकिस्तान की उनमें उन तमाम मामलात में एक मरकज़ी हैसियत है और ये हमारे लिए, ये अम्र हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मैसेज देना चाहूँगा अपनी कम्युनिटी को कि पाकिस्तान उसकी फ़लाह, उसकी बहबूद के लिए अंत तक मेहनत, अंत तक कोशिशें करें जी। अपने अपने दायरों में रह के जिस तरह भी मुमकिन हो पाकिस्तान के लिए अपने आप को वक्फ कर दें जी। 23 मार्च जो कि हमारा रेजोल्यूशन डे है,
اور لاہور ریزولیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو ہم یہاں دیار غیر میں بیٹھ کے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کو امریکہ اور پاکستان کے اندر اس موقع پر کنگریچولیشن مبارکباد دیتا ہوں. اپنا کا اینول کنونشن ہو رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں, وہ بھی اگست 13 سے اگست 14 ہے ڈیٹس, اور اس میں پاکستان ڈے اگست 14 اٹ ول بی اے پارٹ آف دا convention. So there will be a lot of celebration and a lot of people are coming from Pakistan اور ادھر سے بھی. تو all physician community جو اپنا کی ممبر ہے یا نہیں ہے, from your source I am inviting everybody to come and attend that convention. and اس خوشی کے موقع پر سب کو میری طرف سے مبارکباد. ڈاکٹر صاحب, سفیر پاکستان ہمیشہ شانہ بشانہ اپنا کے ساتھ رہا ہے, کیا اسپرنگ میٹنگ ہو, اینول میٹنگ ہو, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سفیر پاکستان کی یہ جو ایفرٹ ہے, آپ اس کو کس لیول پر دیکھتے ہیں؟ جی, سفیر پاکستان اور وقار خان صاحب ابھی ہماری لاسٹ ویکینڈ کو اسپرنگ میٹنگ لاس اینجلس میں ہوئی ہے. دس واز دا میٹنگ آفٹر 20 years وی وینٹ بیک ٹو لاس اینجلس, اینڈ وقار خان اور سفیر پاکستان helped a lot to arrange, organize, and so they are playing a very important role in Pakistan community as well as in Apna. السلام علیکم, میرا نام شوکت ہے اور میرا تعلق کباب کنگ ریسٹورانٹ سے ہے. اور آج کا دن ایک عظیم دن ہے, تاریخی دن ہے, 23 مارچ پاکستان کا, اور اس میں میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. لمبی چوڑی پولیٹیکل ڈیبیٹ چلی کہ جناب جو امریکن سٹیزن شپ لے لیتے ہیں ان پاکستانیوں کا پاکستان سے رشتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن آج کا ایونٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. کئی لوگ کنوینئنس کی وجہ سے بیرونی ممالک کی سٹیزن شپ لے لیتے ہیں, لیکن بائی نیچر وہ پاکستانی ہے, ہمیشہ پاکستانی رہیں گے. 23 مارچ کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ اس دن ہم پاکستان کے نام کی بنیاد رکھی گئی. تعلق پاکستانی امریکن کمیونٹی آف نیو یارک سے ہے. آج کا جو فنکشن ہے بیسیکلی اس میں آگے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم ماشاءاللہ ہر سال آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. قرارداد پاکستان مبارک. بہت خوشی ہو رہی ہے جی, ماشاءاللہ لاٹ آف پاکستانیز آر ہیئر اینڈ سیلیبریٹنگ پاکستان ڈے ان نیو یارک. سب کو جشن آزادی مبارک. بس جی سب کو میں پاکستان ڈے مبارک کہنا چاہتی ہوں. دس از سچ این امپورٹنٹ ڈے ہمارے لیے. بہت خوشی ہو رہی ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم آج اکٹھے ہو کے سارے پاکستانی بہن بھائی قرارداد پاکستان کی یاد تازہ کر رہے ہیں. جہاں تک آج کی فنکشن کا سوال ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے, نہ صرف پاکستانی بلکہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. Just I'm very happy to be here and meet my fellow Pakistani. Actually the president of CAMP, it's the Council for the Advancement of Muslim Professionals, the New York chapter. It has about 6,500 members and it represents ہر state کی الگ کیمپ ہے, اور ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں جس میں مسلم پروفیشنلز اپنے کریئر میں گرو کر سکیں. آپ کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے پاس آ سکیں, اپنی پرابلمز ڈسکس کر سکیں, اور ہمیں ہماری نئے جنریشن کو یہ نہیں ہو کہ ہم آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں. So I'm very very happy about it and we're very happy to be Pakistanis and being here. میزبان بریانی سینٹر, ذائقے دار, مزیدار, خوشبودار, 100% ذبح حلال مغلائی کھانے, حیدرآبادی اور پاکستانی کھانوں کا واحد مرکز. پارٹی اور کیٹرنگ کے ماہر, سالہ سال کا تجربہ اور اعلیٰ خدمت کے ساتھ بے مثال میزبان. Come to میزبان and eat halal food. میرا نام سہیل مسعود ہے. میں کعبہ فیوژن کا سی ای او ہوں. کعبہ فیوژن کے 3 آفیسز ہیں, لاس اینجلس میں, نیو جرسی میں اور ڈیلس میں. ہم لوگ مریضوں کو گھر پہ انٹراوینس دوائیاں اور نرسیں بھیجتے ہیں. ہم ہر طرح کی بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن مین ہمارا جو فوکس ہے وہ نیورو مسکولر ڈیزیزز ہیں جس میں انٹراوینس امیون گلوبولن استعمال ہوتی ہے. وہ بیماریاں ایسی ہیں جیسے مائسینیا گریوس ہے, ملٹیپل اسکلیروسس ہے, CIDP ہے. تو اس بیماریوں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹراوینس امیون گلوبولن بھیجتے ہیں, اور ہم وہ ساری امریکہ میں بھیجتے ہیں. تو اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کو کوئی بیماری ہے اس طرح کی جس کے لیے IV امیون گلوبولن استعمال ہو رہی ہے, تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپروول لے کے اور آپ کے گھر پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. شکریہ.
If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharma Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. नादीन, तो आप देख रहे थे मुलाकात, और कहते हैं आज की शख्सियत जनाब अख्तर अली साहब। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपने आज ये इंटरव्यू से कुछ हासिल भी किया होगा। वो नौजवान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि अमेरिका में यू कैन डू एनीथिंग, बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, और सबसे पहले आप अपने आप से ईमानदार हों, दूसरों के साथ ईमानदार हों, मेहनत करें। ये मुल्क जो है, इसमें स्काई इज़ लिमिट, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड विद योर काज, विद योर गोल्स। नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।